Okay, so this is today's class will be basically focused at, actually every class of mine is focused on the beginners. Okay, and the students who are senior, who have joined a few days earlier, they get a revision every single day, and every single day I take up different essays. So basically it is a different class, and yet it is a beginners class every day, right? And you know, in a language classroom there is never a first day or a last day. There's, see, language learning is a continuous ongoing process. And in the IELTS there is no set syllabus. It is an unending syllabus, but we, by rotation, I keep doing all types of essays and graphs in the writing, so that students can attempt the exam well. Okay, they have the confidence to attempt the exam well. Okay, so here, first thing I'll like to tell all those who are day one, types of essays in the IELTS. Basically, there are three types of essays that are asked in the IELTS. You can get either of the three types, any of these three types: opinion, discuss, problem solution. And I also put this direct question in the problem solution only, because basically it is the same way you have to handle it. Okay, so opinion essays further asked in three ways. You can see these three arrows going from the opinion here, 1, 2, 3. So first I'll tell you about the problem solution or direct question, because in my flowchart I have put that at number 1 here. So there are 2 out of the following 3 things are asked, and rarely all the 3 may be asked. I have picked up one example of each type, and that I'll be handling with you right now. In the problem solution or direct question essay, problem solution, you can be asked the causes and the reasons. Causes or the reasons. Causes and reasons is the same thing. Okay, you can be asked what problems it causes or what effects are there. Now, problems caused, some students are confused with the word caused here. वो कहते causes पूछे हैं, देखो मैम, problems caused because of something. So it is not causes, it is effects. Okay, and the third thing that is asked is solutions. Now, any of the 2 out of these 3 things can be asked. Either they can ask you causes or problems, or causes effects, or they can ask you causes, solutions, or problems and solutions, anything. Rarely they ask all 3. Okay, is that much clear about the problem solution essay? Yes, ma'am. Okay, and in the direct question essay, they will just put a direct question and ask you to answer that in your essay. That I've taken up one example of a direct question also to explain it further. In the discuss essay, they will say, some people say this is, they will expand it and say something. Some people say this, whereas other people say that something. Discuss both views and give your opinion. So this is basically a discuss essay. And then the opinion essay, opinion means in Hindi, it means your rai, your opinion, okay, your viewpoint. So they can ask it in 3 ways. So what are those 3 ways? First is, do you agree or disagree, or to what extent do you agree or disagree? Do you agree or disagree, or to what extent do you agree or disagree mean the same thing? Okay. Do you agree or disagree, or to what extent do you agree or disagree? These 2 things mean the same thing. There is no difference in handling, no difference at all. Some students say their extent is asked, so we have to say 30-40, 30-70, or 40-60 or something like that. No, nothing of that sort. It is just a way of asking. Basically, it means the same thing. So is that clear about the agree disagree of the opinion? Yes, ma'am. The second way an opinion essay can be asked is this a positive or negative development? Now they'll give a statement, and then they will ask you whether it is a positive or a negative development. And the third way your opinion can be asked is, are the advantages more than the disadvantages? Okay. Now, in brief, I'll tell you something more about the problem solution, discuss, and opinion essay. In all types of essays, all these 3 essays, you have to give the introduction, and you have to give the conclusion, and you have to give 2 body paragraphs or 3 body paragraphs. Is that clear? Okay. Okay. Now, in the problem solution essay, introduction, 1 pair of problems, 1 of solutions, and the conclusion. Okay. Or introduction, 2 paras of causes, 1 of solutions, and conclusion. So it can be 5 para essay, or it can be a 4 para essay overall. That is, both are correct. Is that much clear? Okay. Yes, ma'am.
Okay. Then in a direct question essay, they'll ask a direct question, and in the introduction, you have to tell the examiner that you are going to answer that direct question in the essay. Okay. So here in the problem solution essay, you are going to tell the examiner in the introduction that you are going to write the problems and the solutions in the essay. Similarly, in a direct question essay, you are going to tell the examiner that you are going to answer that question in the essay. That is all. That is how you have to handle the intro of a problem solution or a direct question. Okay? Ma'am, can you please repeat once? Yes, sure. Why not? In a problem solution essay or a direct question essay, in your introduction, you just have to tell the examiner that you will be answering what has been asked in the question, that you will be giving the problems and solutions, or you will be giving the causes or solutions, or you will be giving the causes and effects, whatever is asked. You just have to tell the examiner that you will be writing all this in the body of your essay. So you can write it by saying, in this essay, I will discuss the causes and the effects of this problem. Okay. Is that clear? Similarly, in a direct question essay, you are just going to tell, supposing the question asks you, what are the qualities of a good journalist? It's a direct question. So you just have to write in the introduction that in this essay, I'll be discussing the qualities of a good journalist. That is it. Okay. So you will just tell the examiner what you are going to tell him in the body. That is the introduction. There is no difference. So problem solution and direct question I put in one group. Did you understand what I've just told? And is it easy for you to understand, or is there any confusion in your mind? Well understood. Okay. Now, in the discuss essay, what you have to do is, discuss essay will be, some people say this, other people say that. This and that will be something given, okay? And you have to discuss both views. So in this essay, in the introduction, you will tell the examiner that some people say this, you will just paraphrase it and say the same thing. Some people say this, whereas other people say that. In this essay, I will discuss both viewpoints, both perspectives. I personally, then you have to give your opinion. I personally side with the former view or latter view, or you can just expand the view with which you side with and say that in my opinion, this is this. Okay. So that is how you handle the intro of the discuss essay. And then one para of one side view, the other para of the other side view, and then one paragraph of your view, which you may or may not give. You may just give your opinion in the intro and the conclusion. You can write a 4-para essay here or a 5-para essay. It does not matter. There is nothing like this is better or that is better. Whatever way you are comfortable with, you can handle your essay. Okay. Ma'am, there is some word limitations to every para, intro, one para, second para, conclusion. See, the total essay has to be 250. not less than 250 words. Okay. I advise my students to write somewhere between 280 and 310. Okay. Okay, Okay, ma'am. The reason मैम एक बार वो भी बता दो कि कैपिटल लेटर में लिखना है, because I'm still confused. क्या कैपिटल में लिखना है? मैम ऐसे कि हम नॉर्मल जो से लिखते हैं, ऐसे नॉर्मल लिखो आप, कैपिटल्स में अलाउड है सारा ऐसे लिखना, पर टाइम नहीं बहुत लगेगा आपको. तो आप जैसे नॉर्मल लिखते हो रनिंग हैंड में, जो पैराग्राफ, जो फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस दैट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड कैपिटल. हाँ जी, हाँ जी. अगर आपको कैपिटलाइजेशन रूल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे कैपिटल्स में लिखो. ठीक है मैम. उसमें टाइम बहुत लगेगा आपको. Ma'am, they asked us discuss both views and give your opinion. So in the introduction, we also have to give the opinion, or in the conclusion, we have to give the opinion? See, Parmeet, this is a very good question that you have asked. Yeah. Okay, very good question, because when I started teaching way back in 2006, okay, I went through about, many books on IELTS, about 60, 70 books, and everywhere, and on the internet also, through the various resources I could find, I came to know that the discuss essay and the opinion essay, the only difference is that in the discuss essay, you do not have to give your opinion in the intro. You only have to give your opinion in the end. Okay. So basically that is correct. But, beauty, but, capital B, capital U, and capital T. Okay. Okay. But in the IELTS,
in the Mhm. IELTS. You know, Okay. they modified the band descriptors, and now, you know, for 7 band, they have written that in the introduction, the candidate should have taken a stand. Okay. Okay. Now, what is a stand? What do you mean by a stand? Opinion. If you will just say, in this essay, I will discuss both views and give my opinion in the end, where is your stand? So your introduction does not qualify for a band 7. Okay, I've muted you. If you want to say something, unmute and speak. Okay, there was some disturbance. So is that clear? Yes, yes, I got it now. So you must give your opinion in the intro. Okay. Ma'am, Yes, ma'am, can you give an example for I'm such going to handle one essay of every type. ठीक है, I'm going to ठीक give है, you an ma'am. example. Don't worry. Okay. So that is the discuss essay basically. Okay. So what about the opinion essays? There are 3 ways an opinion essay can be asked. In all these 3, basically your opinion is being asked. Okay. They'll give a statement and then they will ask you whether you agree or disagree, or to what extent do you agree or disagree. and in Now, all the 3, we have to give our means agreement or in the introduction part, right? yes, you have to give your opinion in all the 3. Okay, okay, Okay. okay, okay. Now, Ma'am, yes. ma'am, if we write 255 words or 260 words, is that fine? That is perfectly fine. See, if you are making a lot of grammatical errors, I do not advise you to go lengthy. But I'll tell you one thing, over my 15 years of experience, I've had very good students who could not get a 7 and they came to me getting an 8, 8.5 in the other modules and, you know, lagging behind 6.5 in the writing. So there was one student, I tell you, he came and he says that I don't understand. I've taken the test 3 times. Why I'm stuck at 6.5 in writing. So, you know, first day he wrote an essay. I checked this essay. I said, how come you get 6.5? You are writing worth a band 8. Your English is that good. You're making no grammatical error. What is going wrong? I just told him casually, I said, bas chota likha aapne essay, isko lamba karo. Ma'am, we can't write more than 250. I said, who said this? So he was told that 250 word is the limit. So, you know, he had condensed his essay to 252 words. And I told him, I said, go ahead, write a long essay, write 300, 325 words. Your English is very good. You are making no grammatical error. There's no way you'll get 6.5. And the next time he got 8. He was so happy. He was like, he couldn't believe it, you know, that it's just word length. So that is why I give suggestion that, you know, in 250 words, what happens? I'll tell you what happens. Supposing one sentence of yours is repetitive, they will not count the words of that sentence. Then what will happen? It will go under length. Okay. Okay. So the safe limit over length, there is no penalty. See, they just say write an essay in no less than 250 words on this topic. Do they give the upper limit? No. No. Then there is no upper limit. There is no penalty for upper limit. Okay. Okay. और मैम टास्क 1 में Task 1, no less than 150 words. Okay. No upper limit. मैम इनकी वेटेज इक्वल होती है टास्क 1 और टास्क 2 की? No. It's not equal. Task 1 की weightage 1/3 है, इसकी 2/3 है. Okay. So you know how band score 9 में से ही लगता है दोनों का. Supposing आपका task 1 में band है 8 out of 9. Okay. और task 2 में आपके हैं 6 supposing. तो आपका total हो जाएगा 8 plus 6 plus 6 divided by 3. Okay. And if you have 6 in task 1 and 8 in task 2, then 6 plus 8 divided by 3. अब आप overall band score calculate करो. अगर इसमें 8 है उसमें 6 है तो overall क्या जाएगा? 8 plus 6 divided by 3. करो. 6.66. और अगर इसमें 6 है और उसमें 8 है, 6 plus 8 divided by 3. 7 point something चला गया? Yes. Yes, ma'am. 7.3. हाँ, उसकी वेटेज ज्यादा है. ठीक है. टास्क 2 की ना? टास्क 2 की वेटेज 2/3 है, इसकी 1/3 है.
तो टाइम आपको वैसे डिवाइड करना है। टास्क 2 की वेटेज 2/3 है, तो आप उसको कितना टाइम दोगे? 40 मिनट्स, 2/3 ऑफ द आवर्स, ठीक है। Yes. एंड टास्क 1 की वेटेज कम है, तो उसको आप कम टाइम दोगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके ओके। अब ये जो एग्री डिसएग्री ऐसे और टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, और हर बार मुझे कोई ना कोई स्टूडेंट पूछ लेता है कि इसमें डिफरेंस है, तो आई टेल यू देयर इज नो डिफरेंस। ओके, इट इज जस्ट अ वे ऑफ आस्किंग। एक्सटेंट नहीं लिखने लग जाना आपने, ठीक है। एंड इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? इसमें अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी जाएगी कि ऐसे हो रहा है, क्या आपके हिसाब से ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। और थर्ड, कोई स्टेटमेंट दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या ये जो हो रहा है इसके एडवांटेजेस ज्यादा है कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। अब आपको हर चीज हर ऐसे में इसमें पता चल रहा है ना, ओपिनियन मांग रहे हैं आपका, Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो दो टाइप्स है, ऊपर वाली ये जो दो टाइप्स है, इनमें दोनों में हैंडलिंग में कोई फर्क नहीं है। यू कैन स्ट्रांगली एग्री, यू कैन से इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, फिर आपको कोई दूसरी साइड के पॉइंट नहीं देने। अगर आपने यहां कह दिया आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस, दैट मींस you are not going to write anything of the disagree side. Disagreement. Okay. Yes, And here, if you say it is a positive development, you are not going to write anything of the negative side. But Yes. in these two essays, you can also go two ways. By giving a concession, you can agree with a concession, you can disagree with a concession, and in a positive negative development, you can say there are some positives, but overall it is negative. So you are giving a sort of concession to the positive side, but basically you are saying negatives are much more. Okay. And here in this essay, the only difference is between this last type and these two types, that in this type of essay, you cannot go one-sided. अब देखो, इसमें कोई स्टेटमेंट है, आपसे पूछ रहे हैं, are the advantages more than the disadvantages? Can you go one-sided? आप बोलोगे, या तो आप बोलोगे ज्यादा है डिसएडवांटेजेस से, या आप बोलोगे डिसएडवांटेजेस ज्यादा एडवांटेजेस से। इन एनी केस यू हैव टू राइट बोथ। Yes. But in these two essays you can go one-sided. Okay. And when you are going two-sided in any of these three essays, then the handling is absolutely same. There is no difference. एक्चुअली मैम आप फिर से एक बार बताना आर द एडवांटेजेस वाला। उसमें हमने एडवांटेजेस, जैसे उसके एडवांटेजेस ज्यादा हो गए तो हमने उसके एडवांटेजेस जो है वो ज्यादा राइट डाउन करने हैं, और एक जो पैराग्राफ है वो डिसएडवांटेजेस का बनाना है। हाँ, एक पैरा डिसएडवांटेजेस का बना दो जो कि कम है, ठीक है। ओके। हाँ, पर अगर आप एक साइड लिख के थोड़ी कर सकते हो कि आप सिर्फ एडवांटेजेस लिख दो और डिसएडवांटेजेस ना लिखो, फिर तो आपकी टास्क अचीवमेंट के बैंड ही आपके लगेंगे 9 में से नहीं लगेंगे, 4.5 में से लगेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन seeing what you have to do in your essay. Plan your essay well. Planning your essay is the best thing to do, you know. If you spend time in planning the essay, you are actually saving a lot of your time. Okay. Okay, ma'am. So you must plan your essay well while writing. Okay. Now I have picked up one essay of each type. We are going to see. आप मुझे बताओ, ये वाला जो essay है, crime is a problem all over the world and there's nothing that can be done to prevent it. To what extent do you agree or disagree? Crime एक प्रॉब्लम है सारी दुनिया में, कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? आप डिसएग्री करो, बहुत कुछ किया जा सकता है ना, एंड यू कैन से बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ, फिर अब ये देखो, ये एग्री डिसएग्री ऐसे है। दूसरा ऐसे देखो, newspapers have influenced people's ideas and opinions. What are the reasons for this? Is this a positive or negative situation? अब इन्होंने बोला है कि न्यूज़पेपर्स जो है उन्होंने लोगों के आइडियाज और ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करा। इसके क्या कारण है, क्यों न्यूज़पेपर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये जो न्यूज़पेपर्स का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक इन्होंने रीजंस भी पूछ लिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन के साथ साथ। अपने रीजंस का भी एक पैरा बनाना है इस एसे में। टोटल 5 पैरास। ओके, टोटल 5 बनाना। फिर अगर आप लिखते हो कि पॉजिटिव सिचुएशन है तो फिर एक पैरा ही लिख सकते हो पॉजिटिव सिचुएशन का, और 4 पैरे का ऐसे हो जाएगा। अगर आप लिखते हो नेगेटिव है तो 2 पैरे, 1 या 2 पैरे नेगेटिव के कर दो, वो हो जाएगा।
ठीक है, मतलब मैम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना है ना हमने, दोनों या नहीं, आप अगर आप इंट्रो में लिखते हो कि इट इज, आई बिलीव इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो फिर आप सिर्फ दैट ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव? लिखोगे। अगर ओके आप ओके वहां मैम, लिखते हो कि while there are a few negatives overall it is positive, फिर आप negatives भी लिखोगे। ये ओके डिपेंड मैम, करता है, ये डिपेंड करता है योर इंट्रो पे, हाउ यू आर राइटिंग इन द इंट्रो। राइट, Yeah. ओके मैम, So that is how you have to handle this essay. Your intro will decide your body of your essay, the body of your essay. Okay. ओके What you write in the intro, you have to have consistency and just write that in the body. ठीक है? ओके अब मैम, तीसरा ये देखो, in some countries some of the criminal cases in the law courts are shown on the television so that the general public can watch them. Do the advantages outweigh the disadvantages? अब पूछते हैं, कहे ये बता रहे हैं कि कुछ कंट्रीज में ना कुछ क्रिमिनल केसेस है, लॉ कोर्ट्स को टेलीवाइज करते हैं, पूरा लोग देख सकते हैं घर में बैठे बैठे ये केस चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे वो चला था कोई केस, एक सभी इंटरेस्टेड थे, रोज न्यूज लगा के देखते थे क्या बना भाई, क्या बना इसका, यस मैम, जो बाबा जी का केस था, कौन से हाँ, बाबा, राम रहीम। राम रहीम, राम रहीम। हाँ ठीक है। तो उनका अब ऐसे केसेस को अगर टीवी पे ऐसे ही दिखा दे लाइव, कोर्ट में चल रहा है, इधर हम देख रहे हैं, वो इसका ये मतलब है ऐसे का। और उन्होंने पूछा कि कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है, क्या इसके फायदे नुकसानों से ज्यादा है? ठीक है, अब आपको इसमें दोनों लिखने हैं, पर आप जो लिखते हो कि फायदे ज्यादा है तो आपको फायदे ज्यादा लिखने हैं, अगर आप लिखते हो नुकसान ज्यादा तो उनको नुकसान ज्यादा लिखने हैं। ठीक है, अगला इससे देखो, some people believe the radio is the best way to get news while others believe TV is better for this purpose. Discuss both views. यही वही ऐसे डिस्कस, ऐसे कुछ लोग कहते हैं रेडियो अच्छा है, बाकी कहते हैं टीवी अच्छा है, दोनों डिस्कस करो। अब एक पैरा लिख देना क्यों कुछ लोग कहते हैं रेडियो अच्छा है, दूसरा पैरा लिख देना क्यों कुछ लोग कहते हैं टीवी अच्छा है, फिर आप अपना व्यू दे। हाँ मैम, जैसे इसमें अपना ओपिनियन देना, अगर हमने ये लिखना हो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इक्वली रोल प्ले करते, तो ये लिख सकते हैं हम ओपिनियन में? लिख सकते हो, बिल्कुल, आपका जो ओपिनियन आप लिखो उसको सपोर्ट करो, दैट इज इट। ओके मैम। मैम इस टॉपिक को हम इंट्रो में कैसे लिखेंगे? Intro में लिखो, some people say that radio is better whereas others say that TV is better. In this essay I'll discuss both views. I believe the role of both is equal. अगर आपने ये लिखना है तो ठीक है, आप ये लिख सकते हो, बोला both are equally good in their own way, लिख सकते हो ना आप। मैं तो लिखूंगी टीवी बेटर, तो मैं हम पैरा में फिर तो पैरा 1 और पैरा 2 में दोनों को इक्वली एडवांटेजेस दिखाना बताना लिख दो, पड़ेगा। आप 4 पैरे कैसे बना हाँ ओके। अदर्स देखो, नेक्स्ट ऐसे देखो, वी कैन सी मोर डिजास्टर्स एंड वायलेंस ऑन टीवी, शोड ऑन टीवी, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड व्हाट इफेक्ट्स विल दे एक्सर्ट ऑन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। अब देखो इसमें ना कॉजेज एंड इफेक्ट्स मांगे हैं, इसमें सॉल्यूशंस नहीं मांगे। इन्होंने बोला है कि टीवी पे ना बहुत सारे डिजास्टर्स दिखाए जाते हैं, वायलेंस दिखाई जाती है, इसके क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव है। कॉजेज एंड इफेक्ट्स मांगे हैं, सॉल्यूशंस नहीं मांगे हैं। डिजास्टर मीनिंग, डिजास्टर्स ऐसे कुछ भी डिजास्टर हो गया, कहीं पे कोई सुनामी आ गई, कहीं पे कोई फ्लड्स आ गए, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे कोई दंगे हो गए, वो भी तो डिजास्टर्स ही है, वायलेंस में आया डिजास्टर्स, ऐसे डिजास्टर्स है। ठीक है, कुछ भी हो गया। अब जैसे कोविड ही अटैक हो गया, डिजास्टर ही है, सारी दुनिया अफेक्ट हो रही है, तो वहां इतने मर रहे हैं, वहां इतने मर रहे हैं, ऐसे नहीं है ना कितने महीने। ठीक है, okay. Nowadays people get information through news and papers, but meanwhile are uncertain about the truth of these news. Should we believe the journalists? अब ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है? सीधा सीधा पूछा आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन। And what qualities should a good journalist have or correspondent have? सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। मैम डायरेक्ट क्वेश्चन में थीसिस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपकी थीसिस पता है क्या है प्रॉब्लम सॉल्यूशन में और डायरेक्ट क्वेश्चन में? आपकी थीसिस यही है कि आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि आपने इन चीजों का जवाब पूरी बॉडी में देना, बस। ओके मैम, दैट इज इट। If you understand just this simple thing,
Okay, that is it. That is it. IELTS essay जितना मेरे को आज मजा आया ना करा के सारी टाइप्स ये कलरफुल सा डायग्राम बना के I tell you I've never enjoyed taking this class more. अभी मेरा दिल करता है यहाँ पे मैं वो भी लिख दूं how to handle it, strongly agree, strongly disagree, पर ये मेरी पेज पे मेरे बस का नहीं है. Okay, that is it. So it will come. अंडरस्टैंडिंग हो रही है. हाँ, इजीली अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना इससे इजीली अंडरस्टैंडिंग. ये 3 ways डायग्राम ज्यादा अच्छा हो रहा है. ज्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि ये देखो मैंने इसको ब्लू करा, फिरोजी, टर्कोइज, और ये भी मैंने वही 3 कलर्स कर दिए. वो एग्री के ओपिनियन है, ये डिस्कस है, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन है. ठीक है. So I'll be adding this file in the library of my portal, education portal जो बनाया अभी. So I'll not have to share it time and again. So all those who who have registered on the portal can access this file anytime from the library. Okay, I'll go through it. Okay. तो मेरा काम, ग्रुप्स बहुत ज्यादा हो गए व्हाट्सएप पे. अगर किसी ग्रुप में कुछ भूल जाता है डालना तो मेरे को बाद में बड़ा फील होता है कि मैंने इस ग्रुप में नहीं डाला, उसमें नहीं डाला, लाइक दैट. ठीक है. ओके, नाउ वील गो ईच टाइप ऑफ एसे. हमने ये कर लिए पूरे. अब हम ईच टाइप ऑफ एसे को ना ये पढ़ेंगे अभी. ठीक है, और देखते हैं कैसे हैंडल किया है. ओके, टाइम इज अ प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज 2:39. मैम ये सब एकेडमिक की नई बुक में अपडेट होंगे, मतलब ये पुरानी बुक में भी है, पर ये नंबर मैंने नई बुक वाला लिया है. ऐसे तो हैं. ओके मैम, वो भी हैं, पर जो मैं मैम जीटी के लिए भी इस मैम ये जीटी के लिए भी कर सकते हैं. अरे बिल्कुल, देखो मेथड ऑफ डूइंग द एसे इज द सेम. यस मैम. वही है बिल्कुल. ओके, अब ये देखो, ये जो एसे पहला वाला मैंने ऐड करा है उसको मैंने कैसे हैंडल करा है. Okay, crime is a problem all over the world and there's nothing that can be done to prevent it. To what extent do you agree or disagree? It is true that crime is a very grave problem in many parts of the world, and so some believe that it is impossible to address crime. वही कह रहे ना, impossible है, nothing that can be done. तो paraphrasing समझ आ गई. 1 sentence 2 sentence intro है मेरी. Okay, यस मैम. ग्रेव का मीनिंग बताना प्लीज. grave means serious. जो grave, grave problem. Okay, I believe that although it might be challenging to control, it is certainly not impossible. अब मेरा बताओ, मैंने agree करा है कि disagree करा है? दोनों ही बोले हैं. Disagree करा. मैंने ये कंसेशन इस टाइप में दिया है कि चाहे चैलेंजिंग है, मैंने कंसेशन नहीं दिया. मैंने एक तरह से स्ट्रांगली डिसएग्री करा विद द वर्ड नथिंग. नथिंग ये कह रहे कुछ नहीं किया जा सकता. मैंने कहा किया जा सकता है, मुश्किल है, नथिंग मतलब इम्पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये तो कह रहे हैं ना, नहीं मुश्किल है और इम्पॉसिबल है कंट्रोल करना. मैं ये कह रही हूँ मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है कंट्रोल करना. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके, उसके बाद फिर देयर आर मेनी रीजंस व्हाई आई बिलीव दैट क्राइम कैन बी टैकल्ड. बहुत कारण है क्यों मैं बिलीव करती हूँ कि क्राइम टैकल किया जा सकता है. फर्स्टली, गवर्नमेंट्स कैन ट्राई टू एड्रेस द causes of crime to reduce crime. Majority of criminals commit crime due to illiteracy, poverty, or unemployment. Therefore, if the approach shifts from punishing the criminal to addressing why the person stepped on the path of crime, crime can certainly be curbed. Curbed is reduced. Harsh punishments can deter crime to some extent, but crime can only be prevented if the root causes are addressed. तो पहले पैरे में मैंने कह दिया क्राइम को कम करने के लिए रूट कॉजेस को एड्रेस करो, कम हो जाएगा ना क्राइम. Secondly, government must employ the use of technology to tackle crime as it can address the problem of shortage of law and order personnel. अब law and order personnel जो है वो shortage होती है, इसलिए कई बार crime पर CCTV कैमरास जगह जगह इंस्टॉल्ड होते हैं, तो आजकल क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं ना CCTV की वजह से. इसीलिए यस मैम. पकड़े जाते हैं. ठीक है. फिर क्रिमिनल डेटाबेस सेटअप करो. हर बंदे का डेटाबेस हो सरकार के पास. तभी तो आधार कार्ड पे मोदी ने इतना जोर दिया है कि हर एक का आधार कार्ड हो, क्योंकि हर एक का रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास. ओके, अब एवरीवन विद आधार कार्ड, गवर्नमेंट नोज अबाउट दैट पर्सन, दे आर देयर इन देयर डेटाबेस. तो ये डेटाबेस भी सेट होना चाहिए हर बंदे का.
ठीक है, तो इससे भी कम हो जाएगा। क्रिमिनल डेटाबेस, अच्छा फिर क्रिमिनल्स के भी डेटाबेस होने चाहिए। दे कैन नॉट ओनली हेल्प लॉ एंड ऑर्डर पर्सनल टू शेयर इंफॉर्मेशन about criminals with each other, but also better track movement of ex-offenders. This can certainly reduce recidivism to a great extent. Recidivism, ये ना इंद्रूप ऐसे लिखता है, 2-4 वर्ड ऐसे डाल देता है जो let us see. Recidivism, an act or habit of continuing to commit crime, matlab and seeming unable to stop even after being punished again and again. Recidivism Recidivism. ये recidivism है, RE, okay? Yes. हाँ, recidivism, और pronunciation में I की आवाज है, E की नहीं है। Recidivism is repeat crime, और वैसे वर्ड से ऐसे लग रहा था meaning something related to race होएगा, है ना? Wasn't that? Okay. Recidivism to some extent. Okay. In addition, due to global nature of crime, governments across the world must cooperate and work alongside with each other to tackle crime. For example, investigation agencies from different countries must actively share data on criminals. सारी कंट्रीज के अगर लोग अपनी गवर्नमेंट डेटा ऑन क्रिमिनल्स शेयर करें तो फिर भी क्राइम कम हो जाएगा ना, कर्ब करना इजी हो जाएगा सरकार के लिए, ठीक है? यस मैम। ऐसे ना कोई कंट्री किसी टेररिस्ट को छुपा के बैठी है अपनी कंट्री में और दूसरी किसी कंट्री को आने भी नहीं दे रही कि उसको ढूंढो यहाँ पे, तो वो गलत हो जाएगा ना, फिर क्राइम कैसे कम होएगा, ठीक है? Finally, governments alone cannot control crime without the active support of the people. In other words, people themselves need to be more aware and vigilant. For instance, people should report any strange behavior or activity to the police, and businesses should hire employees only after getting a background check done. Okay? In conclusion, although crime is a major problem in most cities of the world, the situation can be ameliorated, is made better by adopting the methods mentioned above. Is that clear? Essay? Logical? Yes, ma'am. Clear? Huh? Vigilant meaning? Vigilant? Yes, क्या कहते हैं, they should be like alert, एक तरह से vigilant का ये meaning होएगा. Okay, ma'am. हाँ, let me share it. Very careful to notice any signs of danger or trouble. Alert, ये मैंने alert ही बोला ना? Alert is yes, ma'am. Yes, ठीक है? Yes. मेरे को when I'm teaching ना, I always find it better to open the dictionary because I don't want to teach anything wrong. Ma'am, what's the meaning of ameliorated? Ameliorated का मतलब है made better. Made better. Okay. Yeah. Can be ameliorated. Problem solution ऐसे में भी ये word डाल सकते हो. To make something better. To make something better. Steps have been taken to ameliorate the situation. Okay? The new laws were designed to ameliorate the problem of chronic debt. The side effects of the treatment can be ameliorated to some extent. Okay? Okay. Okay. So I would like to know. Who all are there day one in this class today. Ma'am Shruti. Shruti, is my class easily understandable and you feel it is being addressed to the first years? Yes, ma'am. Yes. Anybody else? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tesh, okay. Vidya, you also day one? Vidya, yes. I'm on day one. Yeah, can you understand? Yeah, it's very good. Okay. Ma'am, Sunita. Sunita, good. चलो आप सबको समझ आ रहा है ना? बच्चों को ये बहुत, most of the student, ma'am, it was day one, we couldn't understand. Will there be any separate class for the beginners? So is this looking like a class which is not meant for the beginners? No, it's quite very good and very easily understandable. Yes, easily understandable.
Okay, so the second essay today will be quick now. What are the reasons? Is it a positive or a negative situation? This is 243 in my book. I had to write the numbers so that I don't have to search for them again and again. Actually, I just completed this essay, this colorful thing. From 8 to 9, I was busy doing this. Okay. ये मैंने यही वाला essay है ना? हाँ. Okay. Now in this essay, you know, what was difficult, what I found was difficult, and you have to take care of this is not an essay basically on all media. This is an essay focused on the newspapers. So one thing I would like to share with you, media. I have 5 points, okay, for the media advantages or what is the role of media. First, let me know what you understand by media and how many types of media are there, because this is a media essay, basically. Media is of 2 types. Media is of 2 types. First is Printed media. Second is Print media. Electronic media. Electronic. Is e-media or electronic media. Okay, print media is of 2 types, newspapers and magazines. Magazines. Okay, e-media is 3, radio, TV, television, and radio, internet. TV and internet. Sorry, radio, TV, and the internet. Okay. Now, although the points are same, if media had been written here, same points, but see, you have to, because they have put the word newspapers here. So your body of your essay should look as if you are focusing a little on the newspapers more than all media. Okay. For all media, I'll give you 5 points. Open your hand, all your 5 fingers, touch first finger, and then then the point is entertain. Media entertains us. Okay. Second point, media informs us, tells us what is happening all over the world. So first point is information. Second is entertainment. We should learn how to prioritize our points also. Okay. Prioritize. Yes, so first is information. Second is entertainment. Third is media shapes our opinions. Okay. If the media tells us such and such person is good, we start saying that person is good. If the media tells us this person is bad, we start saying that person is bad. Okay. Yes, That is media shapes our opinions. Fourth point is media is a link between the government and the people. How do we reach our voice to any politician? Through the media. Okay? And how do we come to know what the government is doing for us? Through the media. So what is media? Media is a link between the government and the people. And the last point of media is media helps to provide justice at times when needed. ठीक है? अब आप बोलो, आपका कोई पुलिस FIR नहीं लॉन्च कर रही, आप एक धमकी दो, मैं जा रहा हूँ मीडिया के पास, तो फटाफट आपकी FIR लॉन्च हो जाती है. उनको पता है कि अगर पंगा हो गया तो बहुत तगड़ा होएगा. ठीक है? तो मीडिया जो है ना, it helps in providing justice at times, right? So अब हमने, you will go through this essay with me and you will see how I have focused on the newspapers here, because this small thing can make a difference of 6.5 and 7.58 bands. Okay, if you have good English, you don't focus on the newspaper, write it generally of media, you may get a 6.5, but you have to slightly focus on the newspapers. Okay, newspapers of all the media, and then you have to attempt this essay. Newspaper is the oldest form of print media, is one of the oldest forms, is the oldest form. Here it should be. Newspaper is the oldest form of print media. Print media का सबसे पुराना oldest form क्या है? Newspaper. ठीक है? In this essay, I intend to analyze the reasons why newspapers affect people's ideas and viewpoints. While there are a few negative influences of the newspapers, the positives are much more. Now, is this introduction clear? And does it look that am I successful in telling the examiner that I'm going to focus on the newspaper of all the media? Yes, ma'am. Now, the first reason why newspapers are very influential is their easy accessibility. अब मैंने बाकी मीडिया से एक तरह से compare कर दिया कि ये easily accessible है newspaper. ठीक है? In other words,
newspapers are one of the cheapest and most widespread sources of information. सबसे सस्ते हैं, 20 पेज का न्यूज़पेपर आपको 1-1.5 रुपए में मिलता है. इज इट पॉसिबल कि 20 पेजेस का प्रिंट आपको इतना सस्ता मिल रहा है? Otherwise, okay, so it is the first reason why, see, in other words, newspapers are one of the cheapest and the most widespread sources, despite the fact that social media is gaining ground. Ab comparison dekh lo news media ka. Despite the fact that social media is gaining ground, news media still has more readership because there is a sizable population which is not comfortable with technology. मैंने newspaper पे focus करा है ना इससे में? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Another reason is the newspaper's credibility. अब credibility की बात कर ली. पहला मैंने point किया है most widespread, cheapest, most widespread, credible. Okay, most credible. The newspaper's columnists are considered to be experts by the people. The final reason why I believe that news media have had an impact on people's perception and thinking is that when newspapers focus on a particular topic repeatedly, these create awareness. देखो, newspaper की credibility है. Social media पे कुछ भी गलत छप सकता है, वीडियो भी गलत बन जाते हैं. Okay, but newspaper पे जो आ गया, that means people believe it, you know, because they know it is more credible. Is that clear? Yes, Yes, ma'am. excuse me, ma'am. जैसे ये line है ना, I believe that news media have had, ma'am, have इसमें मुझे confusion है. ये हम कब choose करते हैं ये वाले? हाँ, मैं बता देती हूँ. इसमें एक helping verb है और एक regular verb है. अब आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, आपने किसी को बताना है कि मैंने ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट हम had के लिए, हम I have had my breakfast, मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ. ये जो had है ना, ये eaten के लिए है. I have eaten my breakfast. हम eaten नहीं बोलते, हम had ही बोलते. I've had my lunch, I've had my dinner. Newspapers have had this effect. इनका ये effect हो चुका है लोगों पे. ठीक है? Have had, समझ आ गए? Yes, ma'am. हाँ. Thank you. और अगर मैंने past के किसी टाइम से पहले कोई बात ऐसी करनी है तो मैं पता है क्या बोलूंगी? I had my breakfast when you came to my house. मैं अपना ब्रेकफास्ट खा चुकी थी जब तू आई. had 2 बार इकट्ठा आया. ये इंटरेस्टिंग है. आपको समझ आ जाए तो आपको मजा आएगा ये ऐसे सेंटेंसेस बना के बोल के. ठीक है? have had present perfect हो जाएगा. had past का हो जाएगा past perfect. ठीक है? Okay, ma'am. So the final reason why I believe that news media have had an impact is that, you know, they create awareness. Coming to the impact on the positive side, अब मैंने ऊपर क्या लिखा था? While there are a few negative influences, the positives are much more. अब मैं ये positive impact का पैरा मैंने पहले बना दिया. इसमें मैं एक point ज्यादा रखूंगी negative वाले से, क्योंकि मेरे को एक पैरा reasons में चला गया, एक पैरा positives में चला गया, एक पैरा negatives में चला गया. और मैंने ऊपर लिखा है कि नेगेटिव थोड़े हैं, पॉजिटिव ज्यादा है. तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरा पॉजिटिव के जो इफेक्ट है वो ज्यादा एग्जामिनर को पता चल जाए. मैंने ये ज्यादा लिखे हैं. ठीक है? कमिंग टू द इम्पैक्ट ऑन द पॉजिटिव साइड, द मीडिया मेक्स पीपल मोर एम्पैथेटिक एंड अलर्ट. तो लोगों को एम्पैथेटिक करती है और अलर्ट कर. एम्पैथेटिक जो किसी के साथ सहानुभूति, सिंपैथी. एंड सिंपैथी और एम्पैथी में थोड़ा सा फर्क है. एम्पैथी होती है जब आप किसी की जगह पे अपने आप को इमेजिन करके उसके साथ सहानुभूति करते हो. देखो, अगर आपने किसी बेगर को स्ट्रीट पे देखा, आप उसके साथ सिंपैथी कर सकते हो, एम्पैथी नहीं कर सकते. ठीक है? पर अगर आपके किसी फ्रेंड के मदर या फादर एक्सपायर हुए तो यू एम्पैथाइज विद द पर्सन बिकॉज यू फील कि फादर इतने इंपॉर्टेंट, मदर इसने लूज करे, हाय अगर मैं ऐसी होती तो मेरे को कितना दुख लगता. दैट इज एम्पैथी. ओके? Sympathy is just sahanubhuti. Empathy is imagining yourself in that place and sympathizing with the person. That is empathy. ठीक है? So I hope that empathy and sympathy is clear. Yes. It updates people with both good and bad latest happenings, which is helpful influence. For example, media's wide coverage of rapes and murders in surrounding areas creates sympathy as well as alertness in people. Furthermore, news media keeps a check on the government's autocratic tendencies.
अब सरकार कोई ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज करती है तो मीडिया उस पर चेक करती है। मोदी जी के ने किसानों के साथ कराना जो, और तो किसानों मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने मैम वो सारा दिखाया कि सारा हाउ दिखाया। द तो गवर्नमेंट फिर इज तो एक्टिंग। क्या हुआ रिजल्ट? मैम वायलेंस एंड प्रोटेस्ट्स। उसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज पे चेक हो गया, उसको वापस लेना पड़ा। Yes, ma'am. हाँ, तो you can give that example. Okay. They aware people about both the positive and the negative consequences of government's intended measures. Many times governments have retracted steps, have gained negative media The scrutiny. same thing, yes. ठीक है? So who has not heard of the, यहाँ पे एक question mark डाल के, who has not heard of the, इसको क्या बोलेंगे, the किसान, what will you call that? Farmers protest. Who has not heard of the farmers protest in India? Okay. Yes. So like that. On the other hand, the main adverse effect of excessive media influence is that it sometimes leads to protests and even violence, many times due to excessive media reporting and over exaggeration of negative consequences by news media. People begin to oppose government projects. This may slow down and in some cases even disrupt development. This has happened many times in India with protests leading to cancellations of projects like POSCO steel project in Odisha, Kundakulam nuclear power. Yes, ma'am. तो ठीक है. To conclude, the newspaper as one of the oldest media. अब मैंने यहाँ पे फिर newspaper देखो, वैसे तो media ही है सब जगह, पर newspaper और media सेम ही है ना, न्यूज़पेपर मीडिया, पर ऐसे में फोकस है न्यूज़पेपर पे, है ना, ये रखना उसको, ठीक है, दैट इज इट. हम सम सेज कि अगर हम ज्यादा एक वर्ड को अगेन एंड अगेन राइट करते हैं तो इट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. हाँ ठीक है, पहली बात तो सम सेज नहीं हो सकता, सम से होएगा. अच्छा, एस नहीं आएगा प्लूरल के बाद. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसे चिल्ड्रन पे है तो ऐसे में आप चिल्ड्रन वर्ड 20 बार लिख दोगे तो आपका, मैं बता रही हूँ, कोई नेगेटिव नहीं होना. पर अगर आपने चिल्ड्रन की जगह किड्स, ऑफस्प्रिंग्स, नियोनेट्स, टॉडलर्स ऐसे वर्ड डाल दिए तो पक्का नेगेटिव होना. यस, ठीक है. वो सब गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं रेपिटेशन नहीं करो. रेपिटेशन इज परफेक्टली ऑल राइट. ओके. इफ द एसे इज ऑन चॉकलेट, will the word chocolate come 10-20 times? Yes, ma'am. Can you replace it with candy or gummy bears or something like that? No, because it is similar relation, relatives है. ऐसे थोड़ी तो वही ना मैम, न्यूज़पेपर को अब और क्या लिख सकते हैं? वही तो मैं कह रही हूँ. आप न्यूज़पेपर, हाँ, you have to use the word again and again. Okay. People है, बच्चे people लिखते, people की जगह masses. फोक्स. आप 10 बार पीपल लिख दोगे नेगेटिव नहीं होगा. मासेस और फोक्स आ गया तो पक्का नेगेटिव हो जाएगा. क्यों मैम, ऐसा क्यों? मासेस का मतलब पीपल, सारे पीपल नहीं है. मासेस आर ग्रुप ऑफ सम. नहीं, डाउन ट्रॉडन पीपल, द ग्राउंड के साथ लगे, इलिटरेट, राजा और उसकी प्रजा, द किंग एंड हिज मासेस. डू वी पीपल कम इन मासेस? No. So it is not the correct synonym. And ma'am, folks तो बिल्कुल colloquial spoken English का word है. Formal writing में क्यों लिखना है? ठीक है. Okay. So I've been using quite a bit of Hindi. I hope it has not created a lot of problem for those who don't understand Hindi, because whatever I've spoken in Hindi, I have also spoken in English side by side. Whatever I've, if I've spoken any sentence in Hindi or anything in Hindi, I have already spoken that in English to explain it further to the North Indian students. I have spoken in Hindi. Otherwise, there's nothing which has been left out. Okay, it should be all clear to all the students, even those who don't know Hindi. Okay, I just went to the chat box and noted somebody had given a comment, and I do tell my students that please remind me if I'm using too much Hindi. So you can do that, all of you. Okay. Okay, so this essay now you can write, and yes, conclusion also. Conclusion is nothing new in the conclusion. Okay, no new point, nothing, just repetition. Next essay is, in some cases, some of the criminal cases in law courts are shown on television so that the general public can watch them.
Do the advantages outweigh the disadvantages? Okay, so what I'll do is, because it'll be very late, and how many essays are left of one each type? Tomorrow I'll conclude this class. Okay, 1, 2, 3, and 4. These essays I'll share with you right now. Okay, you can go through them, but in detail I'll be explaining tomorrow. But quickly, you can tell me what would be the advantages of televising law courts? People get मैम एक तो information अवेयरनेस about आ laws. जाएगी. अवेयरनेस आ जाएगी, लोग क्राइम से पीछे बेटर होंगे कि अच्छा सारी दुनिया को पता चलेगा अगर Yes, ऐसे yes. पकड़े जाएंगे ये वो. और फिर देखो ये एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज है कि कई बार ना जिसका केस चल रहा होता है उसकी फैमिली वहां जाना चाहती है, बुजुर्ग भी होते हैं घर में, वो जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज और कोई और इश्यूज, वो घर बैठे पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग देख सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, नेगेटिव्स क्या होंगे? Bad impact on kids. नहीं, अगर किसी ने Loopholes ढूंढे मैम गए. वायलेंस एंड प्रोटेस्ट्स. वो हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं वायलेंस प्रोटेस्ट. अब मैम ये राम रहीम वाले केस में देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड प्रोटेस्ट इन पंचकुला एरिया. यस, और जो अगर उसके फॉलोअर्स थे दे वर ऑल ओवर यस और द प्लेस. हाँ, तो मैम पीपल मतलब मैम लोग छुपाएंगे प्रूफ्स जो है, मतलब क्योंकि ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स पता चल जाएंगे उनको कोर्ट की. जिसने गवाही देनी है वो उसको हाँ जी. वो दुनिया की नजरों के सामने आ जाएगा, राइट. तो वो भी डरेगा गवाही देने से. मैम जो इंक्लूडेड है उन सबको. Family of the criminal person can be affected. Yes, they can also be affected. Privacy उनकी जाएगी, फैमिली. एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बड़ा मजेदार पॉइंट मिला था नेट पे जब मैं ये ऐसे लिख रही थी कि अगर टेलीवाइज होने लगे जूरी, हमारी कंट्री में तो जूरी नहीं होती, Yes. 12 मेंबर्स की, ये सारे ना अपना मेकअप आर्टिस्ट साथ लेके आएंगे. कि अब आने मैम लगे. इसमें मैम थोड़ा बहुत हम अभी वो भी लिख सकते हैं मैम, जैसे अभी शाहरुख खान के बेटे को करा हुआ था इन्होंने. वी कैन पुट कि इनकी भी तो मतलब जैसे सेलिब्रिटीज आ रहा है, इट वाज ऑल मतलब ऑल ओवर. यस, इसको उसका तो मैम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो फैमिली मतलब अगर उनका डिसीजन अभी जस्टिस मिली नहीं भी मिली, बट स्टिल दे आर इन अ सिचुएशन कि उनको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है. क्योंकि ये मतलब कुछ भी न्यूज़पेपर ऑल दिस जर्नलिस्ट दे आर, चलो न्यूज वो नहीं भी टेलीकास्ट हुआ फिर भी सारी दुनिया को उसकी न्यूज हर पल की आती रही है. उतने दिन तो टीवी वालों के पास और कुछ था ही नहीं सिवाय. हाँ जी. ठीक है, और मैम हम भी तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना अगेन एंड अगेन द सेम न्यूज़. हम और ज्यादा उसके अंदर चले जाते हैं. अब क्या होगा कल क्या. रेडियो इज द बेस्ट वे टू गेट न्यूज. अदर्स से टीवी इज बेटर फॉर दिस पर्पस. ये हो गया. देन मोर डिजास्टर्स एंड वायलेंस, व्हाट आर इट्स कॉजेस. मैम इसमें एक क्वेश्चन था, डिजास्टर्स ज्यादातर हम कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स पर बात करते हैं, है ना. वायलेंस और डिजास्टर दोनों एक, इसको हम कैसे करेंगे? देखो दोनों ज्यादा दिखा रहे टीवी. इसके क्या कॉजेज हैं? कॉजेज में ये देना है कि हो रहा है ज्यादा, इसलिए दिखा रहा है टीवी. मीडिया को तो हमें सब कुछ वही दिखाना है ना जो हो रहा है. तो मीडिया तो अपना फर्ज पूरा कर रहा है. अगर ज्यादा डिजास्टर्स हो रहे हैं तो दिखा रहा है, अगर ज्यादा वायलेंस हो रही है तो मीडिया दिखा रहा है. कॉजेज ये है. दूसरा रीजन है they want TRP. Okay, right. That is the reason they are showing more of these programs, because people want to see more of these programs and then people go to those channels जो ज्यादा ये वाले programs दिखाते हैं. अब इसके इफेक्ट्स आपने बताने. कॉजेज अपने दो बता दिए, एक पैरा बन गया कॉजेज का. इफेक्ट्स क्या है? इफेक्ट्स ये है अगर लोग ये देखते हैं ना तो लोगों के अंदर डर बैठ जाता है. That fear sets in. Secondly, some people learn crime from here. Yes, ma'am. And third negative effect is people get immune to such things happening. अब immunity develop करने, immune what is immune? Prepared already. These don't affect you anymore. You read a news which is bad, so many people died, and you say, oh, and you come home and eat your burger and pizza. It doesn't affect you anymore. Okay, that is. And in the last essay that I put up here, people get information through news and papers, but meanwhile are uncertain about the truth. Should we believe the journalist? This is a fact given, but the questions they have asked, 2 questions. Should we believe the journalist? I've answered it as like that we should believe the journalist because they are our only source of information, Yes, and then the 5 points I gave you for the media. You remember those 5 points?
Yes. Yes, ma'am. We'll just say that journalists provide us information, journalists provide us entertainment, journalists are a link between the people and the government, journalists shape people Shapes our and Shapes our opinion. opinion. Provide justice to what I. Instead of the word media, you write journalists. That is Journalists. the same 5 points. Okay. Okay, ma'am. And what qualities should a good journalist have? You can write that in one paragraph. Should report the truth, authentic news, should not spread rumors, should be brave and daring because he has to face all sorts of situations. Okay. And then you can, these are the qualities of good communication skills. They are very important in a good journalist, right? I have discussed all these essays with you in a book I'll be sharing. So tomorrow I can pick up any other set of essays and discuss. If you have any problem in these essays, you can ask me. Okay, but is that clear? Yes, And is ma'am. it okay if I share it on the portal? If I share the file over there, you can all pick it up from their library. Okay. Okay, ma'am. I'll share it over there. So it will be lying there. WhatsApp messages disappear after a few days, right? Yeah. Yes. So there it is better to share. I'll share it over there. Okay. Ma'am, do you share formal and informal letter also? If I teach, I'll surely share. Okay. 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 So they are very easy. There's one Okay. I've made. I'll share that with you. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Okay, then see you tomorrow at 11. I've shared one reading. Okay. I've done. Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, is there any other word, like you told the newspaper, we have to use the same words. For children, we have to use the same words. Is there any other words is there we should use the same? I believe all words you should not shirk from repeating the word. You should be very wary and cautious of using the wrong synonym. Okay. That is one major mistake that most students do. They are taught that don't use the same words again and again. Don't use, you will lose bands. This is wrong. Okay. Okay. So students have stress to change the word, and in doing so, they spoil the whole. Yes, ma'am. That is यही सोचने में निकला था अब और क्या लिखे इसको. So don't just give it any importance. Repetition, let it come. Okay. Okay. The word be repeated. Don't worry. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. See you tomorrow at 11. Please make sure you've done the reading beforehand. Yes, Okay? ma'am. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you very much.